गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब लोग दोस्तों? गुड आफ्टरनून दिनेश, तरुण, सौम्य रंजन, कैसे हैं सब लोग दोस्तों? गुड आफ्टरनून। ओके, जानवी, निकिता, अनन्या, काजी, सिंधु, भारत चौधरी, ऐश्वर्या, प्रतिभा, श्रीकांतया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Waiting for law or not? But before law, there is test. I told you in the last class, before starting the class, we will have the test, self-assessment test, and before test, we will have the short revision. So let's start for the short revision. I'm sharing the screen with you. So other good afternoons are there. Anshika, Prasanta, Balaji, Sunil, Mehak, Aditya, Manmohan, Sarthak, Sindhu, Sarvesh, Dhruv. Wow. Good afternoon, everyone. Yash, Aman, Ritu, Ashish, Anirudh, Pranjay, Tejas, Aditya, Shivam, Ayushi, Ashutosh, Sunil, Arpi, Anshika, Brastli, Harshita, Diya Kumari, Namrata, Arey Baap Re. Suman, Haneen, good afternoon, everyone. Raftunisa, good afternoon, Miss R, good afternoon, Adashri, Mohammed Sarfraj, Rahul, Abhishek, everyone, good afternoon, everyone from my side. I think you all of you have taken the revision in the break of one day, and I think you all are ready for the test. भैया टेस्ट के सब तैयार हो ना? तो उससे पहले अपन एक काम करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। Now we are going to revise what we have studied in the last class. Okay? So starting with the contract versus agreement. So 3 points you must learn: promise, agreement, and contract. Promise means offer plus acceptance. Section 2B equals to A plus B. Agreement equal to promise plus consideration. Section 2E equals to section 2B plus 2D. And contract equal to agreement plus enforceability by law. This is very simple. Then what are the essentials? There must be two parties, one making the offer and other is accepting the offer. There must be an intention to create legal relationship. There should not be a social agreement. The legal formalities, if required, should be fulfilled. Meaning of the contract should be certain. Performance should be possible. There must be consent, and consent must also be free. Their party should be competent. Normally, major is competent, person of sound mind is competent, right? And not specifically disqualified by any other law. Next, object and consideration both must be lawful, and agreement not expressly declared void. So these were the essentials of the contract. Classification we have discussed in the last class. On the basis of validity, the 5 contract: valid, void, voidable, illegal, unenforceable. Valid, where all the essential elements required is there. Void, if any essential is missing, right? Illegal, a contract which is forbidden by law. A contract to do anything which is prohibited by law, that is called illegal contracts. Unenforceable, some technical defects
which are required legal formalities, but the issue was on voidable contracts. Some students have issue on voidable contracts. So voidable means the contract which is not void but can be void. जो void नहीं है और void किया जा सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जब तक void ना किया जाए वैलिड रहेगा, बट उसे void करने का राइट एक पार्टी को होता है. ये तीन सिचुएशंस हैं वी हैव डिस्कस्ड. फर्स्ट, व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री. अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को void कर सकती है, राइट. सेकेंड, अगर टाइम एसेंशियल है और टाइम पे काम पूरा नहीं हुआ है, इफ द टाइम इज एसेंशियल बट वर्क वाज नॉट डन विद इन द टाइम, द अदर पार्टी और एग्रीड पार्टी may decide to avoid the contract. ठीक है. Third one, when one party wants to perform but other don't want to provide the facilities so that performance can be done, or other party is not interested for performance, then first party has the right to avoid or continue the contract. There are three situations. On the basis of formation, express contract, which is formed by words spoken or written, implied or tacit other than words. Quasi, which is not expressed, not implied. Actually, the contract was not actually entered. Actual में contract enter ही नहीं हुआ, but situation ऐसी हो गई कि दो पार्टी को बीच में contract आ गया, जिसे हम बोलते हैं quasi contract. And this is the complete topic in your 9th lecture, unit 6, 9th lecture. On the basis of performance, there are two contracts, executed or executory. Executed where both the parties have performed their obligations. जब दोनों पार्टियों ने अपना अपना काम पूरा कर दिया हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, executed. When दोनों पार्टियों ने परफॉर्म करना बाकी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, executory. Executory में भी दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, two types of contract in executory, unilateral and bilateral. When one party has to perform is unilateral, when both party has to perform is bilateral. So this was the revision, but before starting the test, I request you all of you to take 2 minutes to revise this slide, please. 2 मिनट रिवाइज कर लीजिए बच्चों. स्नेहा, अभिषेक, राहुल, गुड आफ्टरनून एवरीवन. दानिश्वरन, अक्षरा, आस्था, खुशी, वैष्णवी, आयुषी, कुमकुम, वेंकटलक्ष्मी, महालक्ष्मी, दृगा भाटिया, साधना. गुड आफ्टरनून एवरीवन. Miss Dриगा भाटिया is asking, sir, what is the difference between bilateral and executory? बेटा bilateral and executory are almost same. ठीक है सर. साधना इज आस्किंग, सर implied versus express डिफरेंस क्या है? बेटा अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बोल के लिख के करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बट कोई कंडक्ट के द्वारा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एटीएम से पैसे निकाले तो वहां तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, एटीएम रखा हुआ है, आपने पैसे निकाले तो ये कहलाएगा एम्प्लॉय. गुड आफ्टरनून लकी, रिया, कीर्तना, आयस्था, आयशा, निकलेश, गौरव. गुड आफ्टरनून बेटा. आयुष, जाकिया, नम्रता, मुस्कान, मुकेश, ज्योति, हर्षिता, मोहम्मद. सर बायलैटरल एंड एग्जीक्यूटिव आर ऑलमोस्ट सेम. यस बेटा. So let's start the test, but before test just prepare the sheet. Please listen. This is the self-assessment test. You need now not to send the answers. You need not to send the answers. ठीक है? You just prepare the sheet C. There are 4 rows in the C in this sheet. Question numbers
answer by student. It means here you have to answer what you are thinking, and I will give you the correct answer. Then you will put and then find out what is your score. Okay. Quasi contract, bete, quasi contract, just like for actually in quasi contract, the contract was not actually formed. Just situations are created. For example, मैंने कल बताया था बेटे, मैंने गुड्स परचेज किया फॉर एग्जांपल किसी शॉपकीपर से और कंज्यूम कर लिया किसी और ने. मैंने पिज्जा मंगाया मान लीजिए, और मेरे जो नेबर था उसने पिज्जा खा लिया, तो पेमेंट नेबर करेगा. दिस इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्चुअल में नेबर का और जो पिज्जा वेंडर था उसका कोई आपस में कॉन्टेक्ट हुआ नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस हो गया, इस वजह से लायबिलिटी जो पेमेंट की आएगी वो नेबर के ऊपर है. जय जिनेन जी, someone is saying सर जय जिनेन जी. ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में तो मैंने बता दिया आप लोगों को. प्लीज स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले फिर एक नई चीज, टुडे स्पेशल गेस्ट. बेटा वॉइस और वॉइड और इलीगल का डिफरेंस. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा वो है जहां पर किसी काम को करने के लिए लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया हुआ है और उसके बावजूद हम कर रहे हैं, किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज इलीगल. बट वॉइड वो है जहां एसेंशियल मिसिंग है, जरूरी नहीं वो इलीगल हो. मान लीजिए आपने आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मिस्टर एक्स से कि वो आपको घर किराए पे देंगे और उसके बाद वो घर गिर गया, तो पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, बट इलीगल तो नहीं है ना. तो ऑल इलीगल आर वॉइड, बट जरूरी नहीं है कि सारे वॉइड इलीगल. ठीक है. सर आप बहुत अच्छा एक्सप्रेशन करते हो, थैंक यू अभिषेक. Ashish saying sir what we have to do in the self assessment test. Okay, you just prepare the sheet. आपको आंसर मार्क करने हैं, ऑप्शन मार्क करने हैं. मैं अभी अब डिस्कस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. बट टुडे स्पेशल गेस्ट, आई विल इंट्रोड्यूस you the special guest of today's class is Mr. Chacha Chaudhary. So Chacha Chaudhary का काम क्या है? What he will do? He will provide the answer. He will give the answer because you know the Chacha Chaudhary का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है. आपको आंसर नहीं भेजने बेटे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. चाचा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आंसर दें. फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट came into force on 1st September 1872, 15 September, 1st October, 15 October. So what you have to do, please write the answer as per your choice. In which column? This is answer by student. And after that you write the correct answer. Then you compare and find out your score out of 10. ठीक है ना बेटे? Shivam, no need to send the answer. Kaji, no need to send the answer बेटा. ठीक है, तो चाचा जी से रिक्वेस्ट करें, चाचा जी प्लीज गिव द आंसर. व्हाट इज द राइट आंसर? ओ चाचा जी सेइंग द ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो प्लीज चेक. नेक्स्ट, the term contract defined in which of the following sections of the Indian Contract Act? Section 2 clause A, section 2 clause B, section 2 clause E, section 2 clause H. So, Chacha ji, what is the right answer? This section 2 clause H. Okay. Next question. A promise is offer plus enforceability, offer plus legal obligation, offer plus acceptance,
offer only. मुकेश, हर्ष, नीरज, बेटा डोंट सेंड द आंसर. क्यों भेज रहे हो फालतू में? आप अपना स्कोर चेक करो, देन यू टेल मी व्हाट इज द स्कोर. ठीक है. द आंसर इज सी. अ प्रॉमिस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. चार चौधरी की मुट्ठी में से आंसर निकल रहे हैं. देखो नेक्स्ट. A contract is an agreement enforceable by law and indulge in litigation with malified intention for social obligation. What is the correct option, बच्चों? The answer is A. A contract is an agreement enforceability by law. Right? Next. Which of the following is not essential element of a valid contract? Which of the following is not essential element of a valid contract? Registration of agreement, free consent, competency of parties, lawful consideration and object. The answer is, Chachaji, what is the answer? The answer is A. Registration of agreement is not requirement for a contract. It's not essential element for a valid contract. Free consent should be there, competency of parties should be there, law consideration or an object should be lawful. A contract in which under the terms of a contract nothing remains to be done. Nothing remains to be done by either party is known as executed contract, executory contract, unilateral contract, none of these. Aditya is asking, sir, registration to necessary hai na? No, beta, registration is not required. There's some specific case on account of gift. I will discuss, but normally registration is not required. Please read the essential carefully. Sir, enforcement by law and intention to create legal relationship are the same. Yes. Competency means, Namrata शायद आप कल क्लास में नहीं थी. No, competence means party should be capable to enter into the contract, right? एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा उसे बेटा वीडियो को. The answer is A, where both the parties have completed their obligation. It is called executed contract, right? Next. An agreement with a party who is not competent to contract. Who is not competent to contract is void, voidable, valid, illegal. Answer is A. An agreement with the party who is not competent to contract is void. Next. A agrees to sell his white car to B for rupees 50,000 or rupees 70,000. It is not a valid agreement as it is forbidden by law for unlawful consideration, not certain, impossible.
The answer is C, because the meaning is not certain, the contract is void. Next. An agreement enforceable by law under the Indian Contract Act may be in writing, may be oral, registered only, either A or B. Either A or B means may be in writing or may be oral. The answer is D, because agreement enforceable law may be oral or may be written. Next. A, last question है. A invites B for his son's wedding. B accept the invitation. In this case, there is an agreement, contract, acceptance, offer. ये बताइए क्या कहलाएगा? Sir, what is the difference between executed and executory? Tanishka beta, I have already discussed. Executed means when both the parties have performed. परफॉर्मेंस हो गया, जो भी करना था कर दिया, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड. अब कुछ बचा नहीं करने के लिए. अगर बचा हुआ है तो एग्जीक्यूटरी, राइट. कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट मींस कैपेबल. ही शुड बी मेजर, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड. ठीक है. Legal formalities I have discussed beta. Legal formalities means like something signing of the check. If any contract is required to be written, like insurance, so if it is oral, it is not a valid contract. Legal formality should be there. So this is अच्छा. इनवाइट किया, ये सोशल एग्रीमेंट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट, because it is not contract. Acceptance offer नहीं आएगा. This is the agreement. The answer is A, and this is the time to say thank you to चाचा चौधरी. Thank you चाचा जी. And आप लोग, आपने आंसर दिए सब बच्चों को. बच्चे सारे थैंक यू बोल रहे हैं. Thank you so much. Now come to the topic. But before, I am just sharing. I am just taking the queries. बताओ बच्चों क्या क्वेरी है? Sir, enforcement by law or an intention to create legal relationships same है क्या? Yes, it is same. Sir, I have a problem. Navya Kumari is asking, sir, I have a problem. I want to order my book, but it shows it only applicable. बेटा ये तो आपको इंस्टीट्यूट बात करनी पड़ेगी. टॉपिक तो बता सकता हूँ मैं. Okay, okay. Janvi got 10, very good. और किसने लिए? शौर्या 10 on 10. Congratulations बेटा. सर लॉ क्या पेपर में एमसीक्यू भी होंगे? बेटा लॉ के पेपर में नॉर्मली एमसीक्यू नहीं होंगे. एक या दो क्वेश्चन होंगे, लाइक करेक्ट और इनकरेक्ट. तो सौम्य रंजन 10 on 10, वेरी गुड. शिवम 10 on 10. अनामिका 10 on 10. अच्छा समझ में आ गया. आई थिंक लॉ समझ में आ गई आपको, कल जो लास्ट में पढ़ा था. वेरी गुड, वेरी गुड. सर लास्ट आंसर इज व्हाई एग्रीमेंट, व्हाई नॉट एक्सेप्टेंस. बेटा देखो, एक्सेप्टेंस वन साइडेड या बोथ वर्क हैज बीन डन. ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो दोनों मिला के अब लाएगा वो एग्रीमेंट. बेटर जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है हमें. जिन लोगों के 10 नहीं आए हैं कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में फिर मौका मिलेगा. क्वेश्चन 10 में सोशल एग्रीमेंट, तो सोशल एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज द बेस्ट सुटेबल आंसर इज एग्रीमेंट. ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन. राइट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. सर एग्जाम में सेक्शन लिखने जरूरी है. आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम. अभी बहुत जल्दी है इस बात को डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना. बट आप कोशिश करिए पढ़ने के लिए, मैं डिस्कस करूँ. सर योर नोट इज सफिशिएंट और वी हैव टू मेक नोट्स. देखिए, you have to refer your study module and my notes. They are sufficient. अगर लगता है आपको कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो प्लीज बनाइए. चलिए, let's start the offer.
तो दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन. अच्छा, स्टार्टिंग से पहले एक बात कहता हूँ छोटी सी यार. Sometime if you getting bored with your study, अब मन नहीं है पढ़ने का, कैसे होगा? बट रिमेंबर माई वर्ड्स, एक लाइन हमेशा याद रखना. योर नेक्स्ट 5 years विल डिसाइड योर रेस्ट 50 years. जब भी ऐसे ख्याल दिमाग में आए ना कि पढ़ने का मन नहीं है यार, देखते हैं, हिम्मत टूट रही है, कोशिश करना यार. और मेरी ये लाइन याद रखना कि योर नेक्स्ट 5 years विल डिसाइड योर रेस्ट 50 years. तो अपने आप पढ़ने में मजा आ जाएगा. ओके. आदित्य इज सेइंग सर क्वेश्चन 10 में कंसीडरेशन कहा था, तो सिर्फ एक्सेप्टेंस ही है ना चाहिए? नहीं बेटा, एक्सेप्टेंस तो केवल मैं पूछता कि उसके पार्ट पे क्या हुआ, तो आंसर आपका सही था. ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर इज एग्रीमेंट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ऑफर. व्हाट इज द ऑफर? अ पर्सन इज सेड टू मेड अ प्रपोजल. A person is said to made a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or action. मतलब क्या हुआ? पहले हिंदी में समझते हैं, फिर मैं इंग्लिश में रिपीट करूं. एक आदमी कुछ पूछ रहा है दूसरे आदमी से इस उद्देश्य के साथ कि सामने वाला हाँ कर दे. अब ये जो पूछ रहा है वो कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए. अ पर्सन इज आस्किंग फ्रॉम समवन with a objective that someone give the consent to his question, and then called first person has made the offer, and this offer may be to do something or to abstain not to do something. See, Mr. X says to Mr. Y, will you purchase my car for rupees 10,000? Now Mr. X is making the offer to Mr. Y. Mr. X Y से पूछ रहे हैं क्या तुम मेरी कार 10,000 में खरीदोगे? यहाँ ऑफर क्रिएट हो. सेक्शन एग्जाम्पल 38C, Mr. X desires to sell his car to Mr. Y for rupees 10,000. This is not the offer. He is just desiring. He is not asking. He is just desiring. वो अपनी इच्छा बता रहा है कि मेरी इच्छा है मैं कार बेचूं. वो पूछ नहीं रहा है, तो ये ऑफर नहीं कहा जाएगा. क्योंकि अगर मान लीजिए आई एम जस्ट मिस्टर एक्स इज जस्ट सेइंग टू मिस्टर वाई, माय डिजायर टू सेल द कार फॉर 10,000, then Mr. Y says okay, I am agree. This is not a promise. The acceptance is not valid because there was not a proposal. There was not a offer. X ने Y से कहा यार मेरी इच्छा है कि मैं अपनी कार 10,000 में बेच दूं. मैंने ठीक है मैं खरीदने तैयार हूं. ओके, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है? आंसर इज नो. बिकॉज जब ऑफर ही नहीं था तो एक्सेप्टेंस कहां से होगा? पहले ऑफर आएगा तब एक्सेप्टेंस होगा. बिगर ऑफर के एक्सेप्टेंस कभी भी वैलिड नहीं. राइट? Thus, for a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something, but mere expression of willingness does not constitute an offer. ऑफर होना चाहिए, सामने वाला हाँ करे कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए. खाली इच्छा से काम नहीं होगा, वो लीगल दायरे में नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 39, where A tells B that he desires to marry by the end of 2004. It does not constitute an offer of marriage by A to B. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. A B से कहता है कि मेरी इच्छा है कि 2004 तक मैं शादी कर लूं, तो ये ऑफर नहीं है, ये इसकी इच्छा है. लेकिन फर्दर सी, if in the above example A further adds
will you marry me? Now it is an offer. ठीक है, क्लियर इतनी बात? Now parties to contract. What are the parties involved in the contract? Tanishka is saying, sir, in example 38, there is no contract. Yes, there is no contract. नहीं बेटे, there is no offer, so there is no contract, right? So what are the parties to contract? First, promiser or offerer, who makes the proposal or offer. Offeree, to whom offer is made. And once the offeree accepted the offer, he becomes the acceptor. Until he is offeree, after acceptance, he becomes the acceptor or promiser. तो भैया जिसने ऑफर किया वो कहलाएगा ऑफरर या प्रोमिसर, जिसको ऑफर किया गया वो कहलाएगा ऑफरी, और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो बन जाएगा ऑफरी, बन जाएगा एक्सेप्टर या प्रोमिसर, राइट? So what are the types of offer? Mr. Rama is asking, sir, यहाँ पर सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाएगा क्या? यस, पूरा सिलेबस कंप्लीट ही होगा बेटे. क्लासेस आपकी ICI तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है. Vanshika is saying, sir, in the last question, in my opinion, there should be acceptance, not agreement. But beta, in my opinion, it should be agreement, because देखिए, listen, अगर मैं आपसे पूछता A ने B को कहा, A ने B को इनवाइट किया शादी में, A invited B in wedding party, and B yes said Y had given his consent. Now what is it? Then it is accepted. But मेरा intention क्या था कि what is the complete term? So complete term is best is maybe promise or maybe agreement. There is no contract, but promise is not there, so answer is agreement. ठीक है? Sadhana is saying offeree and promisee can be same or different. No, they may be same. जिसको भैया ऑफर किया जा रहा है तो बच्चा एक्सेप्ट करेगा, थर्ड पर्सन नहीं एक्सेप्ट करेगा. और टाइप्स ऑफ ऑफर, फर्स्ट इज जनरल ऑफर. जनरल ऑफर मींस ऑफर मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज. See, it is an offer made to public in general, hence anyone can accept it and do the desired act. Section 8 of the Indian Contract Act point out the performance of the condition of proposal is an acceptance of the proposal. What is the meaning? Just come to the example, then we will come back to the provisions. Okay, this was the famous case, that is Carlyle versus Carbolic Small Ball Company. What is the matter? Please read, then I will explain. Carbolic Small Ball Company advertised that a reward would be given to any person who would suffer from influenza disease after using the medicine as per the printed instruction. One lady, Mrs. Carlyle, purchased and used the medicine according to the printed direction but suffered from influenza. She claimed for the reward. It was decided by the court that she would recover the reward as she had accepted the offer by complying with the terms of offer. This was the case. Actually, general offer क्या होता है? What is general offer? General offer means, see, let's see, I want to sell my car. Anyone want to purchase? I'm just making the offer to a group of person, before the group of person, before the world at large. I want to sell my car for rupees 2 lakh. Anyone want to purchase? This is general offer. And how is it? It is accepted by first person who give the consent. The offer is complete. उसके बाद दोबारा कोई और से खरीद नहीं सकता. Right? See, what section 8 says? If condition is given and the performance of condition is the acceptance of proposal,
I make the offer to public. I make the offer to public. I want to sell my car for 2 lakh rupees. Anyone want to purchase? Send me the advance of 50,000 rupees. मैंने जनरल ऑफर किया पब्लिक को कि क्या कोई मेरी कार 2 लाख में खरीदेगा? अगर जो खरीदना चाहता है वो मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे दे, मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे दे। अब किसी ने पब्लिक में हाँ नहीं किया, लेकिन एक भाई साहब ने मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, राइट? अब जब एक ऑफर था तो एक ही आदमी एक्सेप्ट कर सकता है, जब एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑफर नहीं खत्म हो जाएगा। तो जनरल ऑफर मींस ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज and when it is accepted by the first person, anyone, the offer is end. अब कोई दूसरा उसे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर। तो वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बल्ब कंपनी। व्हाट वाज द केस कि एक आदमी ने, कंपनी ने एडवर्टाइज निकाला कि साहब मेरी दवाई, जो हमने दवाई निकाली है, इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़कर जो दवाई कंज्यूम करेगा, अगर उसे वो बीमार हो गया तो कंपनी उसे रिवॉर्ड देगी। ठीक है, जनरल ऑफर हो गया, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैडम कार्लिल ने वो दवाई खरीदी, दवाई खरीद के कंज्यूम की, लेकिन उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, बीमार हो गई, बुखार आ गया। नाउ शी क्लेम द रिवॉर्ड। कंपनी as a was not interested to give the reward, but court has given the decision in favor of the lady. The court said that the reward should be given to the lady because he accepted the offer. She consumed the medicine according to the instruction, according to the offer, and she accepted the offer. Hence, there is a contract between company and Mrs. Carlin, and now company has to make the compensation or reward. कि भैया लेडी ने पढ़ी इंस्ट्रक्शन, दवाई ली, बुखार आ गया, कंपनी ने कहा हम नहीं देंगे पैसे भाई, ये तो ऐसे ही, हमने तो जनरली कह दिया था। तो नहीं, आपने जनरल ऑफर किया था, लेडी ने वो इंस्ट्रक्शन पढ़ी, पढ़ने के बाद तो दवाई कंज्यूम की, तो वो उन्होंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ क्योंकि उन्हें बीमार हो गई वो, तो वो आपको उनका रिवॉर्ड जो है वो देना पड़ेगा। दिस वाज द जनरल ऑफर। वन मोर एग्जांपल, an advertisement given in the newspaper announcing a reward for tracing out a missing person. There was an advertisement in the newspaper to find the missing person and reward for this. It can be accepted by any person who trace out the missing person is entitled to claim the reward. एक एडवर्टाइजमेंट निकला अखबार में कि भैया एक आदमी खो गया, तो ढूंढ के लाएगा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जिससे वो आदमी मिल जाए, वो आदमी मिल गया तो उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, when offer is made to a specific person and that specific offer can be accepted by only that specified person, कोई और नहीं खरीद सकता। See the picture in the slide. If Hina makes the offer to Michelle, only Michelle can accept, other person cannot accept. If they accept it, even that there is no conflict. स्पेसिफिक ऑफर वो होता है बच्चों जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर किया जाता है तो वही उसे एक्सेप्ट करेगा, कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पिक्चर में दिख रहा है कि हिना ने ऑफर किया मिशेल को, तो मिशेल ही एक्सेप्ट करेगी, कोई और एक्सेप्ट भी करेगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस ऑफर। व्हाट इज द क्रॉस ऑफर? सी, लिसन द एग्जांपल. Let's say Mr. X writes a letter to Mr. Y. Mr. X write a letter to Mr. Y. Will you purchase my car for 1 lakh rupees? Mr. X writes a letter to Mr. Y. Will you purchase my car for 1 lakh rupees? Same time,
Same time, exactly same time. Why write a letter to Mr. X? Will you sell your car for 1 lakh rupees? Same term, same time. Both, suppose same, everything is same, but both parties are making the offer. They are called cross offer. X makes the offer, Y makes the offer, the same time the offer cross each other. A problem is that that offer should be before the acceptance and acceptance should be after the offer. When both are made at the same time, the court will presume for which offer or for which acceptance. भाई एक्स ने वाई को बोला, एक लेटर लिख के दिया कि भैया क्या तुम मेरी कार 1 लाख में खरीदोगे? सेम टाइम, एग्जैक्टली सेम टाइम पर वाई ने एक्स को लेटर लिख के दिया, वही लैंग्वेज, क्या तुम अपनी कार 1 लाख में बेचोगे? बात दोनों से एक ही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों का सेम टाइम पे क्रॉस किया। लॉ कहता है ऑफर शुड बी बिफोर द एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस शुड बी आफ्टर द ऑफर, राइट? अब कोर्ट को प्रॉब्लम है कि किससे ऑफर माने, किससे एक्सेप्टेंस माने, इसलिए कोर्ट कहती है कि क्रॉस ऑफर आर इनवैलिड, नल होगा, ये माने ही नहीं जाएंगे। सी, when two parties make identical offer to each other, when two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offer. There is no binding contract in such a case, as the court will not consider and one offer as offer and other as acceptance, and there is no contract. इसलिए कोई contract नहीं माना जाता। See, if A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakhs and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car for rupees 2 lakhs from A, it is not an acceptance as B was not aware of the proposal made by A. It is only cross offer. Same way discussing वही एग्जांपल है जो मैं डिस्कस कर रहा था कि A ने B को दिया प्रपोजल 2 लाख में कार खरीदने का, B ने भी सेम ऑफर किया, लेकिन दोनों को पता ही नहीं था, दोनों ऑफर ने एक दूसरे क्रॉस कर दिया, दोनों ही बेकार हो गए। किसी को ना किसको ऑफर माने, किसको एक्सेप्टेंस, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफर शुड बी बिफोर द एक्सेप्टेंस, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, काउंटर ऑफर. तो वी हैव डिस्कस जनरल ऑफर, पब्लिक एट लार्ज, स्पेशल स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक पर्सन, क्रॉस ऑफर, टू ऑफर मेकिंग द सेम टाइम. Counter offer is you can write counter offer means conditional acceptance. You can write counter offer means conditional acceptance. See, I asked Mr. X, will you purchase my car? Will you purchase my car for 2 lakh rupees? Mr. X says, okay sir, I am ready to purchase your car, but not for 2 lakh, for 1,80,000. मैंने एक्स से पूछा क्या तुम मेरी कार 1-2 लाख में खरीदोगे? एक्स ने कहा सर कार तो खरीद लूंगा, लेकिन 2 लाख में नहीं, 1,80,000। इट मींस एक्सेप्टेंस विद कंडीशन. नाउ माय ऑफर इज लैप्स्ड, मेरा ऑफर खत्म हो गया, नया ऑफर मेरे सामने आ गया. इट मींस एक्स हैज मेड ए न्यू ऑफर बिफोर मी. इट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर. कि whether I will he is asking me, sir, you will sell your car for 1,80,000. Now I decide whether I have to sell or not. So I say no. Now important point, when I say no, I am not ready to sell the car for 1,80,000. X says okay sir, okay, I am ready to purchase at 2 lakh. And I say I am not interested to sell even at rupees 2 lakh. Kya question arises whether Mr. X can enforce me to sell at 2 lakh rupees? What was the case? I asked Mr. X to purchase my car for 2 lakh rupees. He said okay, but not for 2 lakh, for only 1,80,000, right? I told him no, I am not interested to sell at 1,80,000.
He says, okay sir, I am ready to purchase for 2 lakh. Whether I am bound to sell? मैंने पूछा भैया क्या तुम मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे? उन्होंने कहा नहीं सर 2 लाख में नहीं, 180 में खरीदूंगा। मैंने कहा 180 में तो नहीं बेचूंगा। उन्होंने ठीक है सर मैं 2 लाख में खरीद लेता हूँ। ओके 2 लाख में कार मेरी हो गई। क्या वो मुझे फोर्स कर सकता है कार बेचने के लिए? जब तक आप सोचो मैं एक आध क्वेरी ले लूं बच्चों की। इन्फ्लुएंजा बेटा एक डिसीज होती है। ऑक्शन इज जनरल ऑफर। ऑक्शन इज समथिंग डिफरेंट, आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जनरल ऑफर मोस्टली एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर। इन न्यूज़पेपर समथिंग एल्स। रुको थोड़ा सा वेट करो बच्चे। Okay. Now, what actually happened in this situation? My offer was for 2 lakh rupees, but Mr. X denied. It means my offer is closed, right? He made me a new offer for 1,80,000. I denied. That offer is also closed. Now he made me again a new offer for 2 lakh rupees. It's my choice whether to accept or not. He is making the offer. He is not accepting my offer because my offer has been already left. He is making a new offer for 2 lakh, right? भाई पहले मैंने ऑफर किया 2 लाख का, सामने वाले ने 180 का, तो 2 लाख वाला ऑफर तो खत्म हो गया ना, बंद हो गया, दुकान बंद हो गई। अब 180 वाला ऑफर किया, मैंने मना कर दिया। ठीक है, अगेन क्या हुआ? उसने मुझे 2 लाख का ऑफर किया, तो वो 2 लाख का ऑफर मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अपना ऑफर मुझे दे रहा है। इस तरह आप तो 2 लाख में बेचोगे अपनी कार। नाउ आई विल डिसाइड वेदर टू सेल और नॉट। ठीक है, so counter offer means when offeree imposes condition which have the effect of modifying or varying the offer. When the offeree accepts the offer with modification or variation in the terms of original offer, he is said to have made a counter offer. The counter offer amounts to rejection of the original offer. C. A offers to sell his plot to B for rupees 10 lakh. B agrees to buy for 8 lakhs. It amounts a counter offer. It may result in the termination of offer of A. And if later on B agrees to buy the plot for 10 lakhs, A may refuse because B is making a new offer. I think it is clear. Standing offer or open offer, just like a sale for 3 days, उस समय के लिए खुला होता है जो ऑफर 10 दिन के लिए सेल लगी है, they are called the open offer. Offer to public at large for acceptance for certain period of time. It is just like you can say the expansion of the general offer. In general offer, time is included. An offer is allowed to remain open for acceptance over a period of time is called standing open or continuing offer. Suppose the sale for 3 days, tender for supply of goods is a kind of standing. So these were the offer we have discussed. Offer, general offer, specific offer, counter offer, क्रॉस ऑफर एंड द ओपन ऑफर, राइट? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द आंसर इज नो। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो बच्चों? बता दो, किसी को बोरियत तो नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। लीगल रूल्स regarding offer. First, the offer must be capable of creating a legal relationship. I have already discussed. Social invitation, even if it is accepted, it does not create a legal relationship. An invitation to join a friend for dinner if the marriage does not create a legal relationship. I have discussed better. The offer must be certain, definite and not vague. Vague means without base. If the terms of an offer are vague or indefinite,
its acceptance cannot create any contractual relationship. See the example. X says to Y, I will sell you a car, but X has 3 cars and he is not clearing which car he want to sell. So the meaning is not certain, is not clear, so there is no offer. A offers to sell to be 100 quintals of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. So this is not a valid offer. A ने ऑफर किया बी को कि वो 100 क्विंटल ऑयल बेचेगा, पर उसने ये नहीं बताया वो कौन सा ऑयल की बात कर रहा है, तो ये ऑफर नहीं माना जाएगा. बट इन एग्जांपल नंबर 49C, if in the above example, that is example 48, A is a dealer in coconut oil only, it shall be valid offer. अगर मान लीजिए A के पास केवल कोकोनट ऑयल होता और कोई काम नहीं, एक ही तरह का ऑयल यूज हो रहा है, then it is valid offer. Uncertainty का चांस ही नहीं है. There is no chance of uncertainty if a dealer is only one kind of oil. क्लियर इतनी बात? The offer must be communicated. The communication is very much important. Communication. Communication meaning. The meaning of communication. Can you understand the meaning of communication? Communication is not just listening, not just hearing. Communication means to make someone understand. Communication मतलब होता है जिस सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए. When a newborn child makes the communication to his mother about his requirements. छोटा बच्चा दुनिया में आया, बोल नहीं सकता, हाव भाव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो समझा देता है अपनी माँ को कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या रिक्वायरमेंट है. तो कम्युनिकेशन इज नॉट बाय वर्ड्स, इज नॉट बाय लेटर्स, इट इज समथिंग एल्स. कैसे भी टू मेक समवन अंडरस्टैंड. I have already seen, for example, I am from the city of Taj Mahal. So I have seen when I normally I go to visit Taj Mahal sometimes. So I see there the auto rickshaws hawker who cannot understand English, but they can easily communicate their message to the foreigners. So communication is not only the listening or hearing, it is to make someone understand. सामने वाले के दिमाग में अपना मैसेज पहुंचाना is called communication, right? An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made. An acceptance of an offer in the ignorance of offer. Listen, acceptance without the knowledge of offer. Acceptance of offer without in the ignorance of offer means without the knowledge of offer is not acceptance and does not create legal sanction. आपने acceptance तो कर लिया indirectly, पर आपको offer का पता ही नहीं था. See the example. That was the famous case of Mr. Lalman Shukla versus Gauri Dutt. एक बीच में क्वेरी आई है बच्चे की, सर प्लीज अपलोड दिस पीपीटी ऑन साइट. बेटा आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज एक बार चेक कीजिए, आपको वहां मिल जाएंगे पूरे नोट्स. पीडीएफ में पीपीटी अपलोड नहीं कर सकते, दे आर इन पीडीएफ, राइट? सो व्हाट वाज द केस? मिस्टर गौरी दत्त sent his servant L, that is Lalman, to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain award. L traced the boy in ignorance of his announcement. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it was not entitled to the reward as he did not know the offer. What was the case? Mr. G sent his servant L to find the missing nephew. And after that, he made the announcement for the reward for finding the missing person. But Mr. L has no knowledge about this offer. And he find the nephew and informed the Mr. G. After that, when it comes to the knowledge of Mr. L that there was a reward, he claimed. But what court said?
Sir, when you accepted the offer, he asked Mr. L. Court has asked Mr. L. Sir, when you accepting the offer, whether you have the knowledge of offer? He said no. Then there is no offer in your communication. Then how it could be accepted? जी ने अपने सर्वेंट को भेजा लालमन को कि भैया जाओ मेरा भतीजा खो गया, ढूंढ के लाओ। और इसी बीच में गौरी दत्त ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो ढूंढ के लाएगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा। लालमन ढूंढ के तो लिया है, लेकिन उसे इस रिवॉर्ड के बारे में कोई पता नहीं। जब बाद में मालूम पड़ा तो क्लेम किया। कोर्ट ने कहा भाई साहब लालमन जी, आप ये बताओ, जब आपने ऑफर जब एक्सेप्ट किया, ढूंढा, क्या आपको ऑफर की पता थी? उन्होंने कहा नहीं पता थी। जब ऑफर ही नहीं था उस समय आपके दिमाग में, कम्युनिकेशन में, तो फिर एक्सेप्टेंस कैसे हो जाएगा? एंड इन दैट केस लालमन कुड नॉट गेट द अवार्ड एज पर द कोर्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ, द ऑफर मस्ट बी मेड विद a view to obtaining the consent of the offering. Have you watched the movie Sholay? चलिए, अभी जो प्रॉब्लम रह गई बच्चों, मैं अभी एक बार लूंगा इस टॉपिक खत्म करके, ठीक है? हैव यू सीन द मूवी शोले? शोले में एक सीन था जहां पर अमिताभ जी, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी रिश्ता लेके जाते हैं मिस्टर धर्मेंद्र का, और सारी कमी बताते हैं धर्मेंद्र के बारे में। वो ड्रिंक भी करता है, वो जुआ भी खेलता है, व्हाटएवर। तो क्या उनकी इंटेंशन थी कि मोसिस के लिए हाँ कर दे, ऑफर के लिए हाँ कर दे? लॉ कहता है कि द ऑफर शुड बी मेड with a view to obtaining the assent or consent of the offer. If there is no intention to get the acceptance, there is no offer. ऑफर जब किया जा रहा है, जिसको भी किया जा रहा है, ये सोच के किया जा रहा है कि सामने वाला हाँ कर दे, और आपकी इच्छा ही नहीं है कि वो सामने वाला हाँ करे, तो उसे ऑफर नहीं माना जाएगा एज पर द लॉ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। An offer may be conditional. Listen, we have discussed just before, acceptance should not be conditional. Acceptance should not be conditional, but offer may be conditional. See the example. Offerer may ask for payment by RTGS, NEFT, whatever be. The offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid. See, one more example. I told Mr. X, will you purchase my car for 2 lakh rupees? If you want to accept my offer, please reply by email. Please reply by email. So this is a valid offer. Offer may be conditional, but acceptance should not be conditional. Clear? Vague means with the अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी पहले एक बार लूंगा मैं आपकी प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आप ब्रेक मांगोगे कि सर ब्रेक दो। The offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. What is the meaning? See example 53. A proposes B to purchase his Android mobile for ₹500, and if no reply by him in a week, it shall be assumed that B had accepted the proposal. ऑफर में कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसका नहीं होना एक्सेप्टेंस माना जाए। नहीं होना नॉन एक्सेप्टेंस हो सकता है, नहीं होना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाए। अब 53 एग्जांपल में क्या कहा? ए ने बी से कहा क्या तुम मेरा मोबाइल 500 में खरीदोगे? अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं मान लूंगा तुमने एक्सेप्ट कर दिया। लॉ सेज नो, दिस कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट अ राइट वे। नॉन कंप्लायंस of a condition never be accepted. Non-compliance of a condition may be a non-acceptance, but never be an acceptance. अगर ऐसी कंडीशन है ऑफर में तो वो ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। If the offer has a condition like the non-compliance of which would amount to acceptance,
that is not a valid offer. That could not be termed as clear. I have already discussed offer may be specific or general. I have already discussed बच्चों. Offer may be expressed or implied by words. C, by words. It is expressed, implied by conduct. Example number 51C. A boy starts cleaning the scooter and it stops on the traffic signal without being asked to do so. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. Here, boy makes an implied offer. Means a boy just cleaning the scooter and you are going to allow. It means you are accepting his offer. So if you don't want to accept his offer, you have to deny. Please don't do that. स्कूटर रुका, एक लड़का आया साफ करने लगा इसका और आपने उसे अलाउ किया. वो जो साफ कर रहा है तो वो एक इम्प्लाइड ऑफर कर रहा है आपको कि भैया मुझे कुछ दे देना इसके बदले. और आपने क्या किया? उसे एक्सेप्ट नहीं किया. आपने मना कर दिया, वहीं खत्म हो गया. उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकता. बट आप उसे अलाउ कर रहे हैं तो ही मे क्लेम. राइट. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. ये स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है. ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन इन्विटेशन टू ऑफर, अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, a prospectus and advertisement. There are 4 topics in this point. We will discuss each and every one by one. A statement of intention and announcement are never offers. See, a father wrote his son about his wish to making him the owner of all this property. एक फादर ने हमें चिट्ठी लिखी अपने बेटे को कि मेरी इच्छा है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी का वारिस बने. It is just intention, not an offer. It is just an intention. It is not an offer. An announcement to give scholarship to children scoring more than 95% marks in 12th board is not an offer. Just an announcement. Offer must be distinguished from an answer to a question. This was the famous case Harvey versus Fessy. कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आता है उसे हम ऑफर नहीं मान सकते. तो दिस केस वाज द बेंचमार्क केस. व्हाट वाज द केस? आई एम जस्ट रीडिंग देन आई विल एक्सप्लेन. एग्जांपल 54, हार्वे वर्सेस फेसी. इन अ गिवन केस द हार्वे थ्रू ए टेलीग्राम फेसी 2 क्वेश्चंस. Harvey asked 2 questions through telegram from Fessy. First question, listen. First question, will you sell us bumper hall pen? Telegraph the lowest price. Telegraph the lowest cash price. Just a moment, because I think battery is going to down. Okay. The Fessy replied through telegram that the lowest price for bumper hull pen is 900 pounds. Harvey sent another telegram stating that we agree to buy bumper hull pen at 900 pounds. However, the Fessy refused to sell the property at the price. Harvey sued the defendant. Harvey sued the defendant means Fessy, contending that they had made an offer to sell the property at 900 pounds and therefore they are bound by the offer. Now listen, before discussing the decision of the court, see, example क्या है? हार्वे ने फैसी से 2 क्वेश्चन पूछे. क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे? उसका लोएस्ट प्राइस क्या है? हार्वे ने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया, द लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड. उसने इस बात का आंसर नहीं दिया कि वो बेचना चाहता है या नहीं चाहता है. तो क्या हार्वे उसे फोर्स कर सकता है पेन को बेचने के लिए? क्या हार्वे पेन बेचने के लिए फोर्स कर सकता है फैसी को? तो सी व्हाट कोर्ट सेड. It was decided by the Privy Council that while Harvey had asked 2 questions,
Fassi replied only the second question by quoting the price, but reserved their answer with regard to their willingness to sell. That there is no offer. कि भाई आपने दो क्वेश्चन पूछे गए और सिर्फ एक का जवाब दिया, इसका मतलब उन्हें उस वाले क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया कि वो बेचना चाहते हैं या नहीं, उन्हें सिर्फ अपना आंसर दिया क्वेश्चन का. क्वेश्चन का आंसर इज नेवर एन ऑफर. इतनी बात. The offer must be distinguished between invitation to offer. So before discussing this topic, I'm just taking an example. See, let's take a name, Mr. Harsh Prajapati. ठीक है, इसका हर्ष का नाम ले लेते हैं. तो हर्ष went to a restaurant and see the menu and see that in menu card the Shahi Paneer costs 300 rupees. He called the waiter and ordered for the Shahi Paneer. But waiter says, "Sir, the Shahi Paneer is not for 300, it is for 400." हर्ष एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू कार्ड पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है, मेन्यू कार्ड में लिखा होता है कि शाही पनीर कितने रुपए का बच्चों, 300 रुपए का. वो वेटर को बुलाते हैं, कहते हैं, वेटर से कहते हैं, भैया ये एक शाही पनीर दे दो मुझे. वेटर कहता है, ये 300 का नहीं है, ये 400 रुपए का हो गया आज से. क्या हर्ष वेटर को 300 रुपए में शाही पनीर बेचने के लिए फोर्स कर सकते हैं? Whether Mr. Harsh can force the waiter or the hotel manager to sell the Shahi Paneer for rupees 300? The answer is no. Because when Harsh is asking for the Shahi Paneer, he is making the offer. Menu card is not an offer. Menu card is just an invitation to make an offer. One step before the offer. On the basis of menu card, Mr. Harsh is making the offer. Hotel is not making the offer. Harsh is making the offer whether you will sell the Shahi Paneer at 300 rupees. Now it is on the restaurant owner or the hotel owner whether he want to sell at 300 or not. भाई जब हर्ष ने ऑर्डर किया तो हर्ष ऑफर कर रहे थे, वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. मेन्यू कार्ड जो है वो लॉ की नजरों में इनविटेशन टू ऑफर है, जिसके बेसिस पर ऑफर इनवाइट किया जाए, ऑफर से एक स्टेप पहले. तो यहाँ पर ऑफर हर्ष ने किया, होटल ने नहीं किया. हर्ष ने ऑफर किया होटल वाले को, क्या भैया तुम शाही पनीर 300 में बेचोगे? होटल वाले का नहीं, हम नहीं बेचेंगे. तो ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया. नाउ हर्ष उसे इस पोजीशन पर फोर्स नहीं कर सकता. अगर ऑफर होटल वाले ने किया होता और हर्ष ने एक्सेप्ट किया होता, then in that case Harsh can force. Now one more situation, take one more situation in the current example. Harsh asked the waiter, read the menu card and ask the waiter to bring the Shahi Paneer, and waiter brings the Shahi Paneer before the Harsh and Harsh consume it. After that, the restaurant demands 400 for Shahi Paneer. Can he do so? The answer is no. Because when Harsh made the offer, it means he made the offer on the basis of menu card. It means he is making the offer for 300 and bringing the Shahi Paneer by the waiter means acceptance of the offer of the Harsh. When offer is accepted, then hotel manager or restaurant manager cannot demand the more price what is in the menu card. भाई मान लीजिए इसी केस में अगर हर्ष ने ऑफर किया शाही पनीर के लिए और शाही पनीर में क्या हुआ बच्चों, लाके रख दिया उसने, उसके बाद होटल ज्यादा क्लेम नहीं. क्यों? क्योंकि शाही पनीर का लाना इस बात का प्रमाण है कि उसने हर्ष का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. क्लियर इतनी बात? 56 example. An advertisement for sale of goods by auction is an invitation to offer. It is merely invite offers. It is an exception for this. जितने भी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकलते हैं, they are only a
invitation to offer. They are not offers, but there is exception for this rule, remember. But when the advertisement in newspaper is made for reward, it is general offer. See, Mr. X lost his car. He gives an advertisement in newspaper that he will reward for 10,000 who will give the information about the car. Now it is. So advertisement are invitation to offer, but when the advertisement is for reward to finding something, it is always an offer. अखबार में जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, they are invitation to offer, they cannot be forced. बट अगर एडवर्टाइजमेंट किसी खोई हुई चीज को ढूंढ के लाने पर कोई रिवॉर्ड देने का है, तो वो हमेशा ऑफर माना जाएगा. इतनी बात. So before starting super over, the time for super over, I am just taking your queries. Vague means not clear. You can say. हर्ष प्रजापति, शाहगंज, आगरा. गुड. सर इम्प्लाइड ऑफर में भी कम्युनिकेशन नहीं होता. देखिए, इम्प्लाइड ऑफर इज जस्ट लाइक कम्युनिकेशन, इम्प्लाइड कम्युनिकेशन. केस लॉ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है, पर किस तरह करना है वो अपन डिस्कस करेंगे. हाँ यार, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है. मिस्टर आदित्य शर्मा इज सेइंग, सर अगर लालमन कोर्ट में बोल दे तो उसे पता था ऑफर का. यार देखो, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द लॉ, व्हाट शुड बी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिसाइडेड इन द कोर्ट. तो वो अगर लालमन कहता है पता था, तो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा उसे, राइट. Communication through post we will discuss in next hour, beta. Example 54 मैं डिस्कस कर लिया बेटा हिंदी में. एग्जाम्पल 54 आपसे. Aditya is saying, sir, in case of 54, he answered both. No, beta, he answered only the second question, not for the first question. Sir, why menu card is not an offer? Beta, menu card is not an offer as per the law. ठीक है ना, ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है. इस पे बेसिस पर आप इनवाइट करोगे. Okay, okay. Cross offer beta, when two offer, same offer made at the same time, same point of time. Legal offer beta, जो offer valid over, that is legal offer. Sir, your explanation is outstanding. Thank you. Implied and tacit are same. As per my knowledge, as per my opinion, they are same. The discount given is offer. Depend करता है किस तरह से. Actually क्या है ना, discount given is if announcement, discount is not an offer. He just this announcement at the time of making the contract. Actually क्या होता है कि आप ऑफर कर रहे हो दुकानदार को कि भैया तुम इतने बेचोगे नहीं बेचोगे, तो वो डिसाइड करेगा बेचना है या नहीं बेचना, राइट. सो दिस इज द टाइम. क्या रह गया बच्चे? सर सेल इज इन्विटेशन टू ऑफर. नो बेटा, सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑक्शन, नीलामी जहां डिस्कस करेंगे बेटा, अभी रुक जाओ. आज मैं कल डिस्कस भी किया था मेरी बेटी. सर व्हाट हैपेंस इफ एन क्रॉस ऑफर ए एक्सेप्ट बी ऑफर आफ्टर बोथ हैव मेड द क्रॉस ऑफर. बेटा अगर सब कुछ सही है, दोनों तैयार हो गए. एक्चुअली क्या है ना, ए ने सेम ऑफर किया, बी ने सेम ऑफर किया. ए ने कहा ठीक है यार, मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, तो बात ही खत्म, झगड़ा खत्म हो गया. भाई लॉ की जरूरत जब वहां पड़ती है, झगड़ा होता है. इफ देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. ठीक है.
Newspaper advertisement is not an offer. It is offer only when it is for reward. Right, Gufran? Gufran. चलो भैया आप शुरू करो, फिर तुम लोग कहोगे सर ब्रेक दो, ब्रेक दो, ब्रेक दो. चलो भाई शुरू कर दें. फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ब्रेक लेंगे अपन 10 मिनट्स का. ठीक है. One person wants to travel from Agra to Delhi. The bus traveling from Agra to Delhi comes to the bus stand. This is an implied offer, express offer, specific offer, none of the above. एक बार सुन लो बच्चों मेरे. Listen, everyone. Send all the answer in one shot, not one by one. Mukesh is saying, सर सुपर स्टार्ट कर दीजिए. कर दिया मेरे लाल, कर दिया बेटा. नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है. A bid in auction sale is implied offer to buy, express offer to buy, invitation to buy, none of the above. बिड क्या होती है? ऑक्शन नीलामी होती है. नीलामी इसमें बोली लगाते हैं. बिड, बिड करना. हर्ष यार तू बात नहीं मान रहा मेरी. देख ले, मैं तुझसे कह रहा हूँ एक बार में भेजना है या सारे आंसर. यार बात मान लिया करो कभी कभार तो मेरी. दोस्तों तो मेरे. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन. Where there is a counter offer, the original offer terminates. True, partly true, false. Fourth, a person advertised in newspaper to sell his old car. This is general offer, specific offer, invitation to offer, none of the above. Which of the following is a valid offer? Advertisement in newspaper, price list, advertisement including reward, all of the above. A offers B to supply books at rupees 500 each. B accept the same with the condition of 20% discount. It is counter offer, cross offer, specific or general offer. So let's start the answers. One person wants to travel from Agra to Delhi. Bus traveling from Agra, it is an implied offer. Next. A bid in auction sale is an express offer. ये एक्सप्रेस ऑफर है. मुंह से बोल के बताता है वो कितनी बिड को करना. Where there is a counter offer, the original offer terminates. True or false? It is true. A person advertising newspaper to sell his old car. It is a invitation to offer.
Which of the following is a valid offer? Advertisement including reward. Last one. This is a counter offer. देखें भाई किस किसने भेजे हैं. इस बार शिवम ने कहा है, शिवम स्वर्ण ने कहा है सर इस बार मेरे सारे सही होंगे. चलिए चेक कर लेते हैं. यस, शिवम का पूरा दावा बिल्कुल सही है. शिवम, congratulations, you have given all the answers are your answers, all answers are correct. Next one is अभी आए नहीं आंसर्स आप लोगों के. इस बार तो बड़े आपका आप सही नहीं आ रहे भाई. इस बार तो आज तुम लोग सो गए हो कुछ. Next one is Shaurya Bansal and Aishwarya. Next one is Aishwarya. Congratulations. सर अगर एडवर्टाइजमेंट में प्राइस इंक्लूड करें कार का तो क्या होगा? दैट इज ओनली इनविटेशन टू ऑफर बेटा. Sadhana, your all answer correct. So at this place we will have the break of sharp 10 minutes. ठीक है. And in after that we will join. थोड़ा सा ब्रेक ले लो बच्चों, थक गए होंगे तुम. Mr. Nisar ji, please give the break of 10 minutes to the
Okay, before going forward, I think I should take the 5 minutes on super over 3. बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही हैं, तो एक एक कभी चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन 1, one person wants to travel from Agra to Delhi. The bus traveling from Agra to Delhi, it is just a implied offer. I think there should not be any doubt on this question. Second is bid in auction sale. देखिए, ऑक्शन नीलामी होती है. नीलामी में क्या होता है कि एक आदमी कोई प्रॉपर्टी बेचता है, सामने लोग बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, बिड करते हैं. तो बोलते हैं साहब मुझे बिड, और जो सबसे ज्यादा बिड लगाता है, स्टार्ट होगी, मान लीजिए उसने कहा, जिसने जो बेच रहा है उसने कहा था बिड 100 रुपए से स्टार्ट होगी, तो लोग स्टार्ट करेंगे 100, दूसरा कहेगा इससे ऊपर लगाएगा, लेट से 110 रुपए, 120 रुपए. तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्रेसली बता रहे हैं कि उनका ऑफर क्या है, राइट. जो मैक्सिमम बिड लगाएगा that will be accepted by the person who is making the auction. तो ये क्या है हमारा एक्सप्रेस ऑफर. क्लियर है सेकंड पॉइंट क्वेश्चन. थर्ड, काउंटर ऑफर से क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है. ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फोर्थ, एंड a person advertise in newspaper to sell his old car, it is always invitation to offer as per the law. Advertisement with reward is offer, otherwise all are invitation to offer. Clear? Implied means which is other than by words or spoken. I think Ayushi, you were not in the last class beta. Fifth point, which is a valid offer. This is again advertisement in newspaper is invitation to offer, price list invitation to offer. The correct answer is C, advertisement including reward. ठीक है बेटे. 4 का जनरल ऑफर नहीं बेटा. आदित्य इज सेइंग सर 4 में जनरल ऑफर रहना चाहिए. जनरल ऑफर नहीं होगा बेटे, ये इनविटेशन टू ऑफर होगा. अगर ये इस तरह होता क्वेश्चन कि अ पर्सन एडवर्टाइज न्यूज़पेपर टू फाइंड हिज लॉस्ट कार and it is he will be given the reward, then it is offer. But it is to sell the car, it is not general offer, it is a advertisement. This is the only for advertisement. अगर मान लीजिए मिस्टर एक चीख के कहते हैं अरे भैया मुझे अपनी कार बेचने को खरीद दो, then you can say that is general offer, right? So please be clear, this is the advertisement for sell the car, it is not a general offer, it is invitation to offer. प्लीज करेक्ट कर लीजिए अपने आप को बच्चों. फिर डिस्कस कर चुके. सिक्स्थ, डिस्काउंट मांग रहा है, दैट इज अ काउंटर ऑफर. आई थिंक नाउ इट इज ऑल आर क्लियर. सर अगर रितु इज आस्किंग सर अगर रिवॉर्ड होगा तभी ऑफर होगा. यस, अगर एडवर्टीजमेंट है किसी चीज को ढूंढ के लाने का, उसमें रिवॉर्ड लगा हुआ है, देन इट इज ऑफर, अदरवाइज इट विल नेवर बी एन ऑफर, इट इज ऑलवेज एन इनविटेशन टू ऑफर. क्लियर? आगे बढ़े. एक्सेप्टेंस. फर्स्ट स्टेप बाय जनरल ऑफर बट न्यूज़पेपर इज गिवन. बेटा इवन न्यूज़पेपर इज गिवन, आप लॉ को कैसे अवॉइड करोगे? ठीक है. तो जनरल ऑफर कब होता है? जनरल ऑफर आप जब डायरेक्टली आप इंटरेक्ट करते हैं किसी से, दैट इज जनरल ऑफर. ठीक है. जब 10 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, आई वांट टू सेल माय कार फॉर 10 लाख रुपीस, एनीवन वांट टू परचेज, दैट इज जनरल. ठीक है. एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी. अभी हमने पढ़ा ऑफर, नाउ ऑफर विल बी एक्सेप्टेड, कॉल्ड एक्सेप्टेंस. Of proposal or offer is said to have been accepted when the person to whom, underline to whom, that is offeree, the proposal is made signifies his assent to the proposal to do, not to do something. We have discussed that offer may be to do or not to do some things, but acceptance jab hoga when offeree to whom offer is made give his consent, right? So to sum up, acceptance is the significance of the assent to the offer by the offeree.
right? Ashish is saying, sir, question 6, why not crossover? Crossover बेटा सेम ऑफर, या तो डिस्काउंट आ गया ना, कंडीशनल आ गई ना. ए ने बुक्स बेचने के लिए कहा, बी ने उसने क्या कहा, ए ने बुक बेचने के लिए कहा 500 में, बी ने कहा साहब मैं डिस्काउंट चाहिए, कंडीशन लगा दी, तो ये काउंटर ऑफर होगा, ना कि क्रॉस ऑफर. क्लियर? तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस. फर्स्ट लीगल रूल्स, एक्सेप्टेंस मींस यस. सनी पाजी की बात, नो इफ, नो बट, ओनली यस. दैट इज कॉल्ड acceptance. No if, no but, only yes. So acceptance must be absolute, complete, and unqualified, unconditional. Condition should not be there. All the terms and the conditions must be accepted, otherwise there is no acceptance. It is called as counter offer. Example 58. A inquiries from B, will you purchase my car for 1 lakh rupees? We have discussed this example and I am taking again. B replies, I shall purchase your car for 80,000. There is no acceptance. It is simply a counter proposal. And a counter proposal is the offer by the offeree and can result in a contract only if it is accepted by the other. Clear itni baat? Easy hai. Must be communicated to the offerer. And acceptance must be communicated to the person who made the offer. A ने offer किया B को, B ने जवाब दिया C को. It is not a valid acceptance. क्या हुआ? A made the offer to B and B give his acceptance to Mr. C. Who is C? Whether offer is acceptance completed? No. Acceptance will be completed when B give his acceptance to Mr. A. See the example. A proposed B to marry him. B informed A's sister that she is ready to marry him. But his sister did not inform A about the acceptance of proposal. There is no contract as acceptance was not communicated to A. Clear? Next. Important. Acceptance must be made in the mode prescribed. I am just explaining you. Let's take the example. I ask, same example बेटे, एक example सब कुछ खत्म हो जाएगा. I ask Mr. A, will you purchase my car for 2 lakh rupees? If your answer is yes, then reply by email. क्या कहा मैंने A से? A से कहा भाई A, मिस्टर A, क्या तुम मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो कृपया मुझे ईमेल के जरिए रिप्लाई करो. But A has replied by WhatsApp या message. I asked Mr. A, will you purchase my car for rupees 2 lakh? If your answer is yes, please reply by email. But A replied by WhatsApp message. The answer, the acceptance is not in the prescribed mode. It is clear. But what are the consequences? This is important. As the acceptance was not as per the mode prescribed, I have two options. The ball is in my court. I have two options. First, I accept the WhatsApp message and didn't reply anything. It means I have accepted the. Second option, I inform Mr. A, sir, your acceptance is not as per the prescribed mode. Please reply in the mode prescribed. And until that, acceptance will not be there. क्या कहा मैंने बच्चों? जब मैंने A को बोला कि भैया तुम जवाब दो, A ने क्या करा? ईमेल से जवाब नहीं दिया, मुझे मैसेज कर दिया.
अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला मैं शांत रहता हूँ, उसको मान लेता हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। दूसरा, मैं ए को इन्फॉर्म करता हूँ, भैया तुम्हारा जो रिप्लाई है ना वो एज पर द मोड नहीं आया है, एज पर मोड नहीं आया है, तो कृपया अपना रिप्लाई मोड के अकॉर्डिंग भेजो। तो जब तक वो नहीं भेजेगा तब तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाए। क्लियर? If the acceptance is not according to the mode prescribed or some usual or reasonable mode where no mode is prescribed, the offerer may intimate to the offeree within a reasonable time that the acceptance is not according to the mode prescribed and may insist that the offer must be accepted uh, again I'm reading, I missed something. If the acceptance is not according to the mode prescribed or some usual or reasonable mode, the offerer may intimate to the offeree within reasonable time that the acceptance is not according to the mode prescribed. एक सेकंड बच्चों, mode prescribed, then and may insist that the offer must be accepted in the prescribed mode only. If he does not inform the offeree, he is deemed to have accepted the acceptance. See the example. If the offerer prescribed acceptance through messenger peon, and offeree sent acceptance by email, there is no acceptance of the offer. If the offerer informs the offeree that acceptance is not according to the mode prescribed, but if the offer means जो जिसने offer किया, fails to do so, it will be presumed that he was accepted the acceptance and a valid contract will. Clear इतनी बात? Time limit. Acceptance must be given within the specified time, and if no time is given, acceptance must be within the reasonable time and before the offer lapses. C. A offered to sell B 50 kg of bananas rupees 500. B communicated the acceptance after 4 days. Such is not a valid contract as bananas being perishable items could not stay for a period of week. 4 days is not reasonable time in that case. लॉ कह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो विद इन टाइम होना चाहिए। अगर टाइम प्रेस्क्राइब है तो उस प्रेस्क्राइब टाइम में होना चाहिए, अदरवाइज ऑफर खत्म हो जाएगा। और अगर टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है तो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस। सी ने एग्जांपल नंबर 61, ए ने ऑफर किया बनाना 50 किलो, लेकिन उसे जवाब दिया 4 दिन बाद। अब 4 दिन में बनाना तो खराब हो जाएगा, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट? mere silence is not accepted. Silence is mere silence is not a silence, maybe the silence may be the non acceptance but never be accepted. चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता। ए ने बी से कुछ पूछा, बी ने जवाब नहीं दिया, ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ये नॉन एक्सेप्टेंस। सी, the acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer, unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is in the evidence of acceptance. See example number 61, A subscribed for the weekly magazine for 1 year. Even after expiry of this subscription, the magazine company continued to send him a magazine for 5 years, and also A continued to use the magazine but denied to pay the bill sent to him. A would be liable to pay his continued use of magazine was his acceptance of the offer. क्या है बच्चे? ए ने वीकली मैगजीन सब्सक्राइब किया 1 साल के लिए, लेकिन मैगजीन आती रही पैक होके। मैगजीन में ना स्टेपलर लगा होता है या कुछ पैकिंग लगी होती है, वो 5 साल तक आती रही और ए उसे यूज करता रहा। इट मींस ए इज लायबल टू पे द मैगजीन। मान लीजिए अगर ए इसमें मैगजीन यूज नहीं करता, जो क्लिप थी या सील थी वो नहीं ओपन करता, इन दैट केस इज नॉट लायबल। क्लियर इतनी बात?
Acceptance may be in writing, words of mouth. A asks B, will you purchase my car for 2 lakh rupees? B says yes, it is an express acceptance. Implied by conduct, I have discussed. A reaches in a coffee house and demands the coffee. Waiter brings the and keep before A. It means waiter has accepted the. Example 64. When a businessman receives an order from a customer and execute the order by sending the goods, it means he has accepted the offer. It's simple, very. Now it is time to discuss the communication of offer and acceptance. But before, I'm just taking your queries. चलिए. Khushi is saying, sir, good afternoon. Right from the moment I had joined my foundation class, your teaching is amazing. Thank you so much, बच्चे मेरे. Ashutosh is saying in the example of marriage, sir, sister is lost the brother life, and what if the goods is not perishable good? Then till when offer will be valid? Varnika is saying, sir, अगर goods perishable नहीं होता तो कब तक accept हो सकता था? बेटा देखो, reasonable depend upon every situation and final answer will be taken by the court. जनरली डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. इसका हम कोई भी पैरामीटर नहीं ले सकते, कोई भी थर्मामीटर नहीं लगा सकते इसमें कि वो कितना टाइम है. अंशिका क्वासी में डिस्कस कर चुका हूं अभी शॉर्ट में, बट आई विल डिस्कस इन द 9th लेक्चर डिटेल. ठीक है बेटा, प्लीज वेट. और अगर आपको देखना है तो आप कल का लेक्चर एक बार देख लो, उसमें सब चीज मैंने मेंशन की है. इवन आज सुबह भी मैंने आपको, मतलब स्टार्टिंग क्लास में भी मैंने आपको बताया है. प्लीज एक बार देख लीजिए बच्चे. सी द एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ communication of offer and acceptance. See, Mr. O makes an offer to A on 1st January 2021. 2021, right? And this offer was received by A on 3rd January. On 7th January, A replied his acceptance and sent, but it was received by O on 10th. O ने ऑफर किया 1 तारीख को, 1 जनवरी को, जो A के पास पहुंचा 3 जनवरी को. A ने एक्सेप्ट किया 7 जनवरी को और O के पास पहुंचा 10 जनवरी को. क्लियर? ये एक एग्जाम्पल है, इसको दिमाग में सेट करो अपने. इसको हम डिस्कस करते हैं. सी, communication of offer will complete on 3rd January when it comes to the knowledge of A. कब कंप्लीट होगा? कब कंप्लीट होगा ऑफर का कम्युनिकेशन? एक पास कब पहुंचा? 3 तारीख को. तो 3 तारीख को कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा. राइट? आगे देखते हैं. सेकंड लाइन. Communication of acceptance is complete on 7th January when it is put in the course of transmission to him. यानी कि जब उसने भेजा उसके बाद ऑफर के पार्ट पर क्या हुआ, वो ऑफर का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना गया. इसका मतलब 7 तारीख के बाद जब ए ने एक्सेप्टेंस भेज दी, 7 तारीख के बाद वो ऑफर वापस नहीं ले सकता. 7 तारीख से पहले तक, एक्सेप्टेंस से पहले तक वो अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है. एंड अगेंस्ट ए, acceptance is completed on 10th when it comes to knowledge of the proposal. So what are the consequences? See, O cannot withdraw his offer after 7th. It means he can withdraw his offer before the acceptance, that is before 7th. वो अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है 7 तारीख से पहले. ए
कैन नॉट विड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस बिफोर आफ्टर 10th। जब ए का एक्सेप्टेंस ओ के पास पहुंच गया तो ओ उसे विड्रॉ नहीं कर सकता, यानी कि ए अपना एक्सेप्टेंस 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में विड्रॉ कर सकता। वंस अगेन वी कम टू द एग्जांपल, सी द एग्जांपल। Offer is made on 1st January, received on 3rd January, and the acceptance was sent on 7th January, and that was received by offerer on 10th January. This is the example. Communication of offer will complete when it comes to the knowledge of A, offeree, that is 3rd January. Communication of acceptance against offerer when it put in the course of transmission, that is 7th January, and against A, that is acceptor, on 10th January when it comes to knowledge of the proposer. So O cannot withdraw his offer after 7th January, and A cannot withdraw his acceptance after 10th January. इन दो स्लाइड में आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक बार दोबारा पढ़ लो 1 मिनट के लिए। प्लीज रीड वंस अगेन फॉर 1 minute. Communication of offer is completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, that is offeree. I've discussed. When an offer is made by post, its communication will complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made. We have discussed. Okay. A makes a proposal to B to sell his house for 2 lakhs. The letter is posted on 10th March. The letter reaches B on 12th. So the offer is said to have been communicated on 12th when we receive the letter, right? एक मिनट की क्वेरी है बच्चों आप लोग इस पॉइंट पर। What Manish is asking, sir, what if he didn't read the letter received on 3rd January? He read it by 4th January 2021. What when offer is communicated? Listen, what is the language of law? When it comes to the knowledge of person, जब उसको मालूम पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि सर लेटर 3 को मिल गया लेकिन पढ़ा उसने 4 को, तो 4 को माना जाएगा कि 4 को उसने कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, बट he has to prove that he read the letter on 4th. Clear? Varnika is saying, sir, in communication of offer, how A will know that B has put acceptance in course of transmission and he cannot withdraw it? You are absolutely right. Varnika is saying, sir, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि B ने लेटर कब भेजा? Beta, this is absolutely right. But we are discussing the provisions of law. And in case of dispute, the law arises. And in case of dispute, when the law arises, everybody, every party to the dispute has to prove what he is saying. Suppose B says, I have not sent the letter on 7th, I have sent the letter on 6th. He has to prove. A says, नहीं सर लेटर तो उसने 6 को भेजा, 7 को भेजा था, उसे प्रूफ करना पड़ेगा। जो भी डिस्प्यूट करेगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा विद एविडेंस। ठीक है, वी आर हियर टू डिस्कस द व्हाट इज द लॉ, राइट? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, अब डिस्कस कर चुके हैं हम। आई एम नॉट डिस्कसिंग अगेन। कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, एग्जांपल 66। A offers rupees 50,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence of the case. B does not arrive on the date of hearing. This is the omission of doing act is amounts to accept. A ने B से कहा भैया तुम बताइए कोर्ट में 50,000 रुपए दूंगा, तो वो नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? उसने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया। I think we have discussed, this slide has been discussed, most of डिस्कस कर चुके हैं, इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, व्हेन एन ऑफर इज मेड ऑफ द इंस्टेंटेनियस communication like telex, telegraph, fax, email,
The contract is only complete when the acceptance is received by the offering and the contract is made at the place where the acceptance is received. Please note, इसको नोट कर लेना बच्चों. ये क्वेश्चन उसमें आ सकता है, ये वाली बात. In case of telex, the contract is made at the place where the acceptance is received. इसको नोट कर लेना बच्चे. महक रॉय सेइंग सर लेटर अगर रिसीव्ड होगा 3 तारीख को पर उसने पढ़ा होगा 5 तारीख को, तब क्या होगा? अभी डिस्कस किया बेटे मैंने. अगर 5 को उसने पढ़ा है तो 5 को माना जाएगा क्योंकि इस नॉलेज में तो 5 तारीख को आया. लेकिन सब प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि भाई उसने 5 तारीख को पढ़ा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Important slide, communication of special conditions. Normally I'm just taking some special condition are written on the back of railway ticket, laundry receipt, whether in the knowledge of passenger or not, will be treated as accepted by. कह रहा है कि जैसे आपने लॉन्ड्री में कपड़े दिए ड्राई क्लीन के लिए, एक रसीद मिली, रसीद में कोई कंडीशन लिखी हुई है, भले ही आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, ये माना जाएगा कि वो आपने पढ़ ली. It means you are bound with those specific conditions which are printed on the back of ticket or receipt. But there is some exceptions. It means in the following cases, acceptor will not be liable. What are the conditions? Conditions are contained in the document which is delivered after the contract. डॉक्यूमेंट आपको दिया गया कब? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो फिर आप बाउंड नहीं है. सेकंड थिंग इज कंडीशन लिमिटिंग द राइट ऑफ एक्सेप्टर आर नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ एक्सेप्टर. एक्सेप्टर को बताया ही नहीं गया, कोई इंटीमेशन नहीं दी गया. आई थिंक बी एंड सी पॉइंट आर कंबाइंड पॉइंट. कंडीशन लिमिटिंग द राइट ऑफ एक्सेप्टर आर नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ एक्सेप्टर and document does not give reasonable notice on the face that it contains certain special conditions. यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, उसे कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया कि इसके पीछे कंडीशन लिखी हुई है. जैसे नॉर्मली रसीद के पीछे लिखा होना चाहिए, रसीद के फ्रंट पे लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए? PTO, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए. ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंडिकेशन है. अगर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, देन इन दैट केस एक्सेप्टर विल नॉट बी लाइबल. यानी कि जो दे रहा है उसका फर्ज है बताना कि भैया देखो इसके पीछे कुछ लिखा हुआ, पढ़ लेना. और आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ये आपके ऊपर. अगर उसने बता दिया और आपने नहीं पढ़ा, कुछ इंडिकेशन दे दिया उसने, आपने नहीं पढ़ा, तो आप लायबिल हो. ठीक है, लेकिन उसने बताया ही नहीं, कुछ इंडिकेशन ही नहीं है, तो आप लायबिल नहीं. सी एग्जाम्पल नंबर 68. A passenger deposited a bag in the clock room at railway station. The acknowledgement receipt given to him carried on the face of it the word "C bag." One condition limited the liability of railway for the any package to 100. The bag was lost and the passenger claimed 2,500 being its actual value, pleading that he had not read the condition. Held the passenger will not succeed whether he read them or not. क्या लिखा हुआ है कि एक पैसेंजर ने क्लॉक रूम से, क्लॉक रूम जहां पर व्हेन द लगेज आर केप्ट फॉर सम टाइम, तो क्लॉक रूम पे कुछ अपना सामान डिपॉजिट जमा किया. जो रसीद मिली उस पर लिखा हुआ था सी बैक, और बैक पे लिखा था कि आपका कोई भी नुकसान होगा हम केवल 100 रुपए के लिए लायबिल है. पैसेंजर ने पढ़ा ही नहीं और सामान खो गया. उसके बाद उसने 2,500 रुपए क्लेम किए. लॉ ने कहा नो, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, यू आर बाउंड टू दैट, बिकॉज उसके फ्रंट पे कंडीशन लिखी हुई थी सी बैग, यानी आपको इंडिकेशन दिया गया था कि कृपया पन्ना पलट के देखिए. राइट? Suppose if in the above example C bag was not mentioned on the front of document, then passenger will succeed. अगर C bag नहीं लिखा होता तो पैसेंजर सक्सीड हो जाता. ठीक है बच्चों? रिवोकेशन ऑफ ऑफर आप डिस्कस कब कर सकते हैं?
A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposal, but not after. Time for revocation of acceptance and acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor, but not afterwards. So in the first paragraph, we are talking about the 3rd January, and in the we are talking about the 7th January. And in the second paragraph, we are discussing about the 10th. Just a moment. Here we are talking about 3rd January 2021, and here we are talking about, sorry, 3rd नहीं बेटे, गलती हो गई, 7th January, and here we are called about 10th January 2021. कोई हैंडराइटिंग सही नहीं आ रही बेटा, माइंड मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ रिवोकेशन और लैप्स ऑफ ऑफर। इससे पहले ये लास्ट टॉपिक है, इससे पहले तो क्वेरी ले लूं बच्चों आपकी मैं। सर, लाइक द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एप्स which we don't study a single time but still we agree। चलो भाई, गलत हो तो नहीं होगा, but you are bound। अगर आपने कंडीशंस नहीं पढ़ी हैं तो even that you are bound। Manish Jain is asking, sir, different language is applicable in this point. I am not understanding better what we want to ask. Please make it clear. Till that, I am just discussing the last topic of today's session, mode of revocation. The first is by communication of notice of revocation by offerer at any time before its acceptance is complete as against him. Means, in the example, O made the offer to A, that was his on 3rd, but acceptance was made on 7th. Even before 7th, O can send the notice to A, sir, I am withdrawing my offer. In that case, A cannot force O for the offer. भाई O ने ऑफर किया था A को, जो 3 को पहुंचा, 3 तारीख को पहुंचा, ठीक है। 7 को एक्सेप्ट किया, लेकिन 7 से पहले ही अगर वो चाहे तो मना कर सकता है एक को, भैया मैं तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो ऑफर ही नहीं मान रहा, मैं ऑफर अपना विड्रॉ कर रहा हूँ, ऑफर विड्रॉ कर रहा हूँ, आप प्लीज एक्सेप्ट मत करो। इस केस में ए उसे फोर्स नहीं कर सकता। वो एग्जाम्पल 69, एट एन ऑक्शन सेल ए मेक्स द हाईएस्ट बिड फॉर बीज गुड बट ही विड्रॉज। अच्छा, इन ऑक्शन व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, when auctioneer says highest bid 1, 2, 3 gone, putting the hammer, कब कंप्लीट होती है? जब वो हैमर पुट कर देता है। लेकिन हैमर पुट करने से पहले ही जो हाईएस्ट बिडर था उसने नाम वापस ले लिया। एंड एट एन ऑक्शन सेल ए मेक्स द हाईएस्ट बिड फॉर बीज गुड, he withdraws the bid before the fall of hammer, the offer has been revoked before its acceptance. By lapse of time, if not accepted in prescribed time, if however no time is prescribed, it is not accepted within reasonable time। भाई सिंपल सा फंडा है, अगर ऑफर में टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ऑफर खत्म, राइट। और अगर कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो रीजनेबल टाइम, रीजनेबल में नहीं होता है तो वो ऑफर खत्म होता है। रीजनेबल क्या है? वी हैव डिस्कस्ड, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। Next is non-fulfillment by the offeree of a condition precedent to the acceptance। यानी कि ऑफरी ने जो कंडीशन थी ऑफर की वो फुलफिल नहीं की तो ऑफर विड्रॉ हो जाए। See the example number 70. As a seller agrees to sell certain goods subject to the condition that B, the buyer pays the agreed price before a certain date. If B fails to pay the price by that date, the offer stands revoked। क्या कहा इसमें? ए ने कहा भैया अगर तुम्हें मेरा गुड्स खरीदना है तो हमें प्राइस भेज दो। उसने प्राइस नहीं भेजी, इट मींस ऑफर खत्म हो गया।
by death or insanity of the offerer, provided the offeree comes to know of it before the acceptance. अगर डेथ हो जाती है ऑफरर की तो ऑफर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ acceptor has no knowledge about the death of the offerer and he makes the acceptance, then the legal heir of the offerer has to complete the contract, right? Suppose A ने B को कोई ऑफर किया माल बेचने के लिए, A had made the offer to B for sale of goods. After that A has died, B, but without the knowledge of the death of the A, accepted the offer. Now A, legal heir of A has to complete the contract. But see, if the offer was concerned with personal skills, like A has made the offer to B to paint a picture for Mr. B, and A died, in that case the contract is end, offer is end, whether in the knowledge of offeree or not. भाई सिंपल सा फंडा है लॉ का। ऑफरर की डेथ हो गई, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट द नॉलेज ऑफ डेथ, उसे पता ही नहीं कि ऑफर डेथ हो गई, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे जो ऑफर के लीगल हेयर है उन्हें ये कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ऑफरर का जो ऑफरर था उसका कुछ ऐसा काम था जिसमें पर्सनल स्किल चाहिए थी। सपोज ओ ने कहा ए से कि भैया मैं फाइनली पिक्चर पेंट करूंगा, अब ओ की डेथ हो गई, तो ये ऑफर ए को पता हो या नहीं हो कि डेथ हो गई है इस ओ की, तब भी ऑफर खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां पर उसकी पर्सनल स्किल चाहिए थी। नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर इज मेड, डिस्कस कर चुके हैं, जब काउंटर ऑफर आता है तो ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, वी हैव डिस्कस। इफ लॉ इज चेंज आफ्टर मेकिंग द ऑफर, लॉ इज चेंज, in that case also the offer was end, offer was revoked, right? Sir, in YouTube recorded lectures are not downloaded. But you can download the lectures the lectures are available at the app, जो mobile app है ICI की, उस पे available है। Precedent means पहले से required. Language which is used in special condition except Hindi and English, someone doesn't know the language, then normally it is presumed that Hindi and English language normally in condition mentioned on the local language, but the person who says that he had the no knowledge of the language which is printed on the back side of the receipt, he has to prove in the book. अगर कोई ये कहता है साहब वो भाषा में लिखा है जो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ या मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, तो उसे कोर्ट में प्रूव करना, राइट? तो दिस इज द टाइम फॉर सुपर ओवर 4। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। When the proposal is or acceptance is made otherwise than the words, the promise is said. When the proposal or acceptance is made otherwise than words, the promise is said to be expressed, implied, accepted, rejected. But you have to select the best suitable answer, right? अगर थक गए हो तो बस 5 मिनट और दे दो मुझे। After 5 minutes, I will make you free. Next, Sohan offered a reward to anyone who will find his lost dog. Mohan brought the dog to the Sohan without having knowledge of the offer. Is Mohan can recover the reward from Sohan without the knowledge of offer? Next. Rahul received an offer by letter. He gives his acceptance by letter, which are duly stamped, addressed and put in the letter box. This amounts to Rahul received an offer by letter. He gives his acceptance by letter and which are duly stamped, addressed and put in the letter box.
This amounts to valid acceptance, not a valid acceptance, not in the prescribed manner of acceptance, none of the above. Communication of acceptance is complete as against the acceptor. Communication of acceptance is complete as against the acceptor only when it is listen. Communication of acceptance is complete as against the acceptor when it is put in the course of transmission, when it comes to knowledge of the proposer, when it is communicated to the acceptor that the acceptance as is the proposer, none of the above. आपको लॉ की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो बेस्ट आंसर है वो देना है बेटे. Shivam, send all the answer in one shot, please. Fifth, on the face of the railway receipt, it is mentioned that to look for the terms and condition, look behind. Mr. A got the railway receipt but didn't read the terms and condition. He is not bound by the terms and condition, bound by all the terms and conditions, whether he read or not, both of the above, none of the above. Last question for the day. A, when accepted becomes a promise. Start करते हैं आंसर्स. फर्स्ट आंसर बच्चे मेरे, when the proposal or acceptance is made otherwise than words, the promise is said to be implied. Second, Sohan offered a reward to anyone who will find his lost dog. Mohan brought to the dog without the knowledge of the offer. Mohan can recover? Answer is no. Third one, Rahul received an offer by letter. He gives his acceptance by letter, which are duly stamped, address is valid acceptance. Next, communication of acceptance complete against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. Next, on the face of railway receipt, it is mentioned that to look for the terms and condition, look behind. Mr. A got the railway receipt but did not read the terms and condition. He is bound by all the terms, whether read or not. Last question. A proposal when accepted becomes a promise. So who is the lucky one? First one is Shivam Savan. Next one is Varnika. Congratulations both. Third one is Janvi. Congratulations beta. Fourth one is Jyoti. Jyoti, please you when you send the answer, please also mark the option A, B, C, whatever. ठीक है?
and Manish Jain. So these were the all answers. These were all the correct answers, and hopefully please revise this complete unit, and in the next class on Monday we will have the test of what we have discussed today. So hopefully you enjoyed the class. लॉ पढ़ने में मजा आया होगा दोस्तों. मिलते हैं, थक गए होंगे तुम लोग. थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. निशांत जी, प्लीज क्लोज द क्लास.